Good morning students, I am Pragati, your psychology teacher, and today I am taking with you post-traumatic stress disorder of chapter 4 or psychological disorder. Till now we have studied all these the disorders of anxiety disorder, post-traumatic disorder, OCD, but I just want you that we go through the post-traumatic disorder in more detail so that we can understand this disorder much more easily as compared to studying it from a book. Because now I'm going to share some kind of examples, the reality practicals with you which I have shared in my life, okay, and all that things which I have experienced of my clinical experience I will share with you related to the disorders, okay. So in this disorder, the post-traumatic disorder, it is also known as trauma stress related disorder. Why these disorder create? Due to a trauma. The trauma can be anything, because of anything. The stress, the relation of this trauma can be like you have lost someone, your loved one. Maybe there could be any family dispute, or we can say that it could be any, you have moved from any we can say natural disaster like tsunami, earthquake, flood, something as that. Now if we see the reality, the present situation of Bihar, in that we can see that there are the number of lives has destroyed, number of people have lost their homes, the shelter, their loved ones, and now they don't have anything to eat or to survive, right? So those people will face this kind of disorder. There the mental pressure or the mental disorder which is being faced by those people in that situation is considered under traumatic stress related disorder. This disorder is after some dreadful impact, after something which has been occurred, and it affects your psyche, your mental abilities, where you have lost all the things which were there for you as your essentials, your loved ones or your relationships, anything as such. If you have lost them, then this kind of disorder is being created, okay. So now we are going to understand how this disorder is. Main thing which you need to understand is about the symptoms. Always take care that what if you get any disorder to explain, you need to know its causes, the symptoms, what the disorder is all about, or is it have any types which is being distinguished or which can be explained to you. So trauma stress related disorder is a post-traumatic stress disorder. In this disorder, anything, if you are facing a problem after a trauma and you are getting recurrent dreams, if a patient is having recurrent dreams, the incidents has been revolving in his, coming in his dreams or in her dreams of that particular incidents. Like now flood has happened in the place and someone, a survivor, has been saved out. Now in the dreams he's been facing or he's been seeing such conditions again and again. That is recurrenting of dream, जहाँ पे सपने जो है वो बार बार आ रहे हैं उस सिचुएशन की जो हो चुकी है और जिसकी वजह से उस पेशेंट को प्रॉब्लम हुई, उसने सब कुछ खोया. हिंदी में भी मैंने आपको बताया. नेक्स्ट मूविंग टूवर्ड्स द flashback. What is flashback? You are seeing some kind of flashbacks of the same incident. It is as related to the recurrent of dreams. The flashback is also correlate with these, but here these flashback can be in a present situation when the person is in morning, he's been standing up or working in particular situation, or in some incident happens similar to the past one, then the flashback of the previous incidents comes in front of the person, okay. So what is flashback? In which आपको पहले जो इंसिडेंस हो चुका है वो अब दोबारा दिख रहा है. क्यों दिख रहा है? क्योंकि आप उसी पुरानी ही कुछ सिचुएशन के अकॉर्डिंग सिचुएशन में इस बार दोबारा पढ़े हो, तो आपको वो पुराना इंसिडेंस फ्लैशबैक में आपको याद आया आपकी सबकॉन्शियस माइंड में, ठीक है. नाउ मूविंग ऑन द थर्ड पॉइंट,
दैट इज इम्पेयर्ड कंसंट्रेशन। ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम पर्सन जो है, अगर पेशेंट जो है वो उसको फ्लैशबैक आ रही है, वो ड्रीम्स, रिकरेंट ड्रीम्स आ रही हैं, ओके, सो ही वोंट बी एबल टू कंसंट्रेट, राइट ना। तो कंसंट्रेशन लेवल्स जो है वो इम्पेयर्ड हो जाती है। इम्पेयरिंग ऑफ कंसंट्रेशन लेवल इज मीन्स डिक्रीजिंग ऑफ द कंसंट्रेशन लेवल, यू कैन नॉट focus over a particular incident, over a particular thing, okay, so that is something about the impaired concentration. Now coming over emotional numbing. Emotional numbing का क्या मतलब है? Emotional numbing means when a person is emotionally weak, not able to judge anything, is not able to relate himself with a new relationship, when they are completely sitting in a numb situation, is not able to face what is happening, what's not happening, even though just after the floods, if you see any person who faced that situation, that the survival, he is sitting just like a statue. You can see that the from eyes the tears are coming out, but he's not showing it over the face. So that is something related with emotional numbing, okay, जहाँ पे आपके जो इमोशंस है वो खत्म हो गए हैं, आपके फेस एक्सप्रेशंस पे नहीं है, आप बोलना बंद कर जाते हो. I was working in Vishwas Hospital. There was a lady come. He lost his husband recently, and the love, it was about a marriage which was obviously, अगर marriage है, love fun है, husband is very near to the person ना, पार्टनर के सबसे करीब होता है, whether he is husband or a wife है ना, आपका पार्टनर आपके सबसे करीब होता है. तो उस सिचुएशन में वो लेडी 4 दिन के लिए बिल्कुल नम हो गई थी. इमोशंस उसके आंखों में आंसू थे, लेकिन वो निकल नहीं रहे थे, वो रो नहीं पा रही थी, वो आवाज़ नहीं निकल रही थी, उसके बात नहीं कर पा रही थी, वो बिल्कुल नम बैठी थी. मेरी बात सुन रही है, रिस्पॉन्स देना चाह रही है, लेकिन नम है. भूख लगी है, ठीक है, खिलाओगे, खा लेगी, ये पानी मांग लेगी, लेकिन बिल्कुल नम है, बोल नहीं रही है. ठीक है, इशारे करके मांगेगी, बोलेगी नहीं. तो वो लेडी का बहुत टाइम तक काउंसलिंग सेशंस हुए, उसकी मेडिसिन्स भी चली, और फिर उसके बाद स्लोली एंड स्टेडली वो सिचुएशन को समझ सकी कि मैं कहाँ हूँ, क्या चीज़ है, क्या हुआ है, एंड देन शी स्टार्ट क्राइंग. ओके, so that was something in very emotional thing, but the emotional numbingness was there in that lady. Okay, similarly, तो क्योंकि उसका trauma क्या था? She lost her husband, so that was a traumatic situation for that. Okay, now in this, 2 things which we need to understand is about this somatic disorder and somatic symptom. These 2 symptoms we need to understand. A person is having post-traumatic stress, okay, but with that we've been having something related to somatic symptoms, or maybe showing some dysomatic symptoms. Okay, so you need to understand the difference between somatic symptoms and dysomatic symptoms. Okay, so what do we know by the somatic symptoms? सोमैटिक सिम्टम्स क्या होते हैं? जिसमें जो पर्सन है, ही इज एक्सपीरियंसिंग बॉडी रिलेटेड सिम्टम्स इन द एब्सेंस ऑफ मेडिकल कंडीशन. ये आप 2 टर्म्स जो है मार्क करो अपने बुक में भी. बॉडी रिलेटेड सिम्टम्स शो कर रहा है पर्सन, बट अगर हम मेडिकल चेकअप करते हैं तो मेडिकल कंडीशंस में वो कम्प्लीटली फिट है. फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बताया था कि अब पेशेंट आया है डॉक्टर के पास और कह रहा है कि आई एम हैविंग अ सीवियर स्टमक एक. नाउ द प्रॉब्लम इज व्हाट? ही इज सेइंग दैट आई एम हैविंग अ सीवियर स्टमक पेन एंड आई एम फीलिंग लाइक दिस पेन इज नॉट गोइंग टू बर्स्ट माई इंटेस्टाइन. ओके, द डॉक्टर टेक अ मेडिकल चेकअप क्विकली. इफ यू any patient will come to doctor and saying such things, will go for a medical complete medical checkup, है ना, एंडोस्कोपी होएगी, फिर उसके अलावा अदर जो भी रिलेटिव है
डिसऑर्डर के मेडिकल कंडीशंस में चेक होएगी, तो एंडोस्कोपी हो रही है या फिर अल्ट्रासाउंड हो रहा है और उससे उसमें कुछ नहीं आ रहा, इंटेस्टाइन्स आर कम्प्लीटली फाइन, stomach is completely fine, all things are working very normal. Okay, so this is something which is related with the somatic symptoms, but the situation of that, this is known as somatic symptoms disorder. This point, if you can see this only symptom, with this one you have an additional symptom of something. Okay, so if these symptoms are there plus you are seeing such kind of symptom as well, then you say that the person is suffering from post-traumatic disorder under somatic symptoms. Okay, with somatic symptoms. तो अब वो एक्सपीरियंस कर रहा है बॉडी रिलेटेड सिम्टम्स को और एब्सेंस ऑफ अ मेडिकल कंडीशंस. ओके, नेक्स्ट कमिंग ओवर, when if a person is feeling very anxious and the anxiety levels increase in his personality and serious medical condition, developing some serious medical condition and worry about that possibility that कि भी मुझे कोई medical condition serious होने लगे. Now the person can he told that I first symptom यहाँ पे आ गया कि भी I am feeling having a severe ache, stomach ache. Now the person will say I am going to get any cancer. मेरे कैंसर हो सकता है, अल्सर्स कैन फॉर्म इन माई स्टमक, इंटेस्टाइन्स में अल्सर है या फिर मुझे कैंसर हो सकता है स्टमक का, आप चेक करो. ओके, तो इंटेस्टाइन कैंसर हो सकता है. इस तरह के वो आपको बहुत ज़्यादा घबरा जाता है खुद से. अगर हम प्रेजेंट पेंडेमिक सिचुएशन को देखते हैं, if we see the pandemic situation right now which is going on in our country, so if we see that in this also some of the people seeing whether they are watching news 24/7 or they are listening all the negative things or working over this, and every time they've been going through this, the death rates or with the situation in which the people are being affected, so they are in such kind of maybe this can spread and hide some kind of loss or some kind of we can say जो शक है वह में वो बन रही है ना. तो कुछ तरह की अफवाहें भी फैल रही है. तो वो जो चीज़ें हैं वो एक एंजाइटी हाई कर रही है. पीपल आर गेटिंग हायर एंजाइटी लेवल्स बिकॉज दे आर गेटिंग अफ्रेड, दे आर नॉट हैविंग अ कंप्लीट नॉलेज. सो इन सिमिलरली द पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में भी जो एंजाइटी लेवल्स है वो बहुत हाई हो जाती है, जिसकी वजह से हम इसे कहते हैं इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर. व्हाट वी से इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर. थर्ड पॉइंट जो हमने सोमैटिक डिसऑर्डर में देखना है वो ये है कि सफ़र फ्रॉम अ लॉस ऑफ मोटर और सेंसरी एंड विदाउट नो फिजिकल कॉज. नाउ सेंसरी ऑर्गन्स है, मोटर ऑर्गन्स है, उसमें लॉस लगेगा, वेदर इट इज ब्लाइंडनेस सेंसरी और वेदर इट इज पैरालाइज, मोटर एक्टिविटीज बंद हो गई है. Okay, so these are the some of the things which you will see in a patient. Paralyzed हो गया या वो कहेगा मुझे दिख नहीं रहा है, आप आइज चेक करोगे, आइज ठीक है पर उससे दिख नहीं रहा है और ठोकरे खा रहा है. ऐसे नहीं है कि वो आपको सिर्फ एक्टिंग कर रहा है, रियली ही कुड नॉट सी. We will be facing that blindness. Okay, but if we see the physical cause, there is no physical cause. There is no harm in the eyes. There is all the organs are very working properly, but he is still lying like a dead body, paralyzed हो गई है body. So that is also a functioning of cohesion, and that is also found in somatic symptoms disorder. Okay, now moving towards the other part. It is obviously reverse of this, but in the mental related or physical psychological related effects. This is known as dyssomatic disorder. Dyssomatic disorder. What is dyssomatic disorder? In this, unable to recall, he is unable to recall some important personal information often related to stressful or traumatic response. अगर कोई stressful response है, कोई traumatic response है, तो उसके related आपको problem हो सकती है. Unable to recall
some important things, means यहाँ पे जो memory है वो loss हो रही है, memory loss है और वो normal से ज़्यादा है, dissociative है, they are being disassociated with the memory and the memory loss is being seen in this due to stressful situation और traumatic response की वजह से, ठीक है। सेकेंड पॉइंट जो इसमें हमने ध्यान देना है वो ये है experience changes. There are two kind of experience with the person which change according to the situation. Person sense of reality. What is this? I'll just explain you. Wait a minute. And second point is perception of self. Now how it is different. Like two different experience कर रहे हैं. एक है personal sense of reality. The person is not having their sense of reality, in which situation he is. Now I told you the example of the lady, she is completely numb, na? So now she is not understanding the situation. She is completely out of the situation, completely out of the reality and is staying in the same frictional world where her husband is there. She want to stay at that place only. So that is something related with the personal sense of reality, जहाँ पे हम reality को face नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है। और perception of self क्या है? Perception of self होता है जहाँ पे हम अपनी personality को, अपनी self को जो है एक fake personality के form में बना रहे हैं। हम अपने आप को कुछ और समझना चाह रहे हैं और सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम अपने आप को या तो वीकर समझेंगे या वेरी सुपीरियर समझेंगे, तो हमारी जो परसेप्शन है खुद के लिए वो चेंज हो जाती है। सो दिस इज नोन एज परसेप्शन ऑफ सेल्फ। ओके, नाउ कमिंग ऑन द थर्ड, विद दिस आई हैव टोल्ड यू एन मूवी एग्जांपल आल्सो एंड आई टोल्ड यू दैट यू विल मस्ट वॉच मूवी है तो प्लीज देखना। So in this video, after finishing this, do tell me that you have seen this movie or not. It was the CDs. So have you seen that or not? It is of Abhishek Bachchan, which was related with multiple personality disorder. So same, the disorder, dissociative somatic disorder. The third symptom is related with that only. Okay? अब जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस है उसको भी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस था, अगर आप उस मूवी में देखोगे आपको स्टार्टिंग में पता चलेगा उसमें भी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस है। ओके, सेइंग इट अगेन एंड अगेन मूवीज, पर वो सीरीज है लेकिन फिर भी आप समझ रहे हो कि मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। द डार्क शेडो वाली जो मैंने आपको ब्रीथ बताई है, ब्रीथ इन द डार्क शेडो मूवी सीरीज़ जो कि अमेज़ॉन प्राइम पे है ना, आपको मैंने बताया भी था। तो उस मूवी को देखना, उसमें आपको कम्प्लीटली मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में एक एक सिम्टम बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा और उसमें आप ये पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की वजह से मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर कैसे क्रिएट हुआ ये समझोगे, राइट। सो इन दिस द पर्सन इज एग्जिबिटिंग टू और मोर कॉन्ट्रैक्टिंग पर्सनालिटी, तो दो अलग पर्सनालिटीज फॉर्म हो जाती है। एक पर्सनालिटी को पता है दूसरे के बारे में, पर जो मेन दूसरी पर्सनालिटी है उसे पहले वाले के बारे में नहीं पता। लाइक इन दैट देयर वाज टू पर्सनालिटी ऑफ हिम, वन वाज नेम विद ए एंड अदर नेम विद जे, द अदर पर्सन वाज जे। जे नो अबाउट ए बट ए वाज नॉट अवेयर अबाउट द जे, राइट। सो दिस थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो दो पर्सनालिटीज़ में कैसे रहता है, क्या है वो सब आपको जब आप ये सीरीज़ देखोगे पता चलेगा। और यू डू टेल मी दोज स्टूडेंट्स हैव वॉच्ड दिस मूवी or the series, do comment and let me know that have you watched it or not. Okay, and if you haven't, then we will arrange something for you and we just make it out some or other way to explain you what the thing is. Okay, so this is all about post-traumatic stress disorder, and this disorder, every disorder having some or other kind of working on the in Bollywood, you can see with that. Like the next topic which I'm going to take with you is about depression, which is completely practical going on
There are number of topics in which we can talk about, we can study on this. Depression is the most major disorder which has been rising in 2020. Okay, and if we say that heart attack, diabetes are the most number one, but now if we consider WHO report, depression is also coming on the top of the list, right? So that is something which we are going to study after post-traumatic disorder, and in that also I will surely share any kind of animated video or some kind of things with you so that you understand it more well. Okay, so that's all with the class. And now student, your small homework is that you just make notes on this, and please do comment under the video for your presence, for your welfare. Okay, thank you and have a nice day.